Good evening, students. How are you? Is everyone fine? Doing great? Yes. Okay. Wonderful. All right. Fine. So, Divyanshu, you are new admission. I haven't seen you earlier. I mean, yes. Are you? Okay. We have what we were doing last time. We have already done with mineral riches in the soil. Correct? Are we correct? Mineral riches, water pollution in the soil. How soil is rich in minerals. How do these minerals help soil to rejuvenate its basic nutrient values? Yes, 1 minute. Okay. So we have done that. Okay. Sharing my screen with you all. Okay. So there we are. Can you see my screen, everyone? Is my screen visible? Yes. Okay. Perfect. There we are. So last time हमने क्या देखा था? ये देखा था. Their modern farming practices involve the use of large amounts of fertilizers and pesticides. Okay, so these substances over a long period of time destroy the nutrient level in the soil. Now, if उस nutrient level को restore करना भी तो है और soil formation के process को millions, thousands and millions of years लगे हैं. So हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से soil के nutrient resources वापस उसमें restore की जाते हैं. दो चीजें होती है उसके लिए. पहली तो ये होती है, पहला ये प्रोसेस होता है जिसमें आप सॉइल को क्रॉप रोटेशन से ये करा दो, इंट्रोड्यूस करा दो. फॉर एग्जाम्पल, एक फार्म लैंड है, फार्मिंग वाली लैंड के ऊपर अगर आप क्रॉप रोटेशन डाल दो, फॉर एग्जाम्पल जून से लेके सितंबर तक एक क्रॉप ग्रो होगा, फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक या जनवरी तक दूसरा क्रॉप ग्रो होगा, और फरवरी से लेके मई तक या फिर अप्रैल तक जो तीसरा क्रॉप ग्रो होगा, और मई की पूरा मई का महीना आपका जमीन वैसे के वैसे रहेगा, बैरन रहेगा, ओपन रहेगा, उसमें कुछ ग्रो नहीं होगा. इससे क्या होगा कि सॉइल की जो रिस्टोरेशन वैल्यू है वो सेट हो जाएगी, और हर क्रॉप को अलग अलग न्यूट्रिएंट लगते हैं. सारे क्रॉप को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, सारे क्रॉप को मिनरल की जरूरत नहीं होती है. ओके, ये सारे क्रॉप को पोटेशियम की जरूरत नहीं होती है. तो जब दूसरा क्रॉप ग्रो होता है तो बाकी के मिनरल्स रिस्टोर होना शुरू कर जाते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे ये देखा था. इसके बाद देखा था कि इरोजन ऑफ सॉइल कैन लीड टू वास्ट रिसोर्सेस का डिप्लीशन, बिकॉज सॉइल इटसेल्फ इज अ रिसोर्स. ओके, इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स. अगर सॉइल इरोजन हुआ तो हमारे पास प्लांट्स नहीं बचेंगे, प्लांट्स नहीं बचेंगे तो हमारे पास जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फूड साइकिल डिस्टर्ब होगी. ओके, सो फार इज क्लियर विथ एवरीबडी. तो हमने लास्ट टाइम में यही पढ़ा था. एवरीवन क्लियर? यस, वी विल गो अहेड विथ बायोकेमिकल साइकिल. नाउ व्हाट आर बायोकेमिकल साइकिल्स, और इनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस क्या है. A constant interaction between biotic and abiotic components of the biosphere make it dynamic but stable system. Very important. हमारी environment में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो नेचर में साइकिल्स है, वाटर साइकिल, फूड साइकिल, उसके बाद नेचर में लाइफ साइकिल, ये सारे जो साइकिल्स है वो बैलेंस्ड होते हैं. ठीक है, हियर दीज. ओके,
Biosphere make it a dynamic but stable system. These interactions consist of transfer of matter and energy between the different components of the biosphere. ये जो cycles है क्या करते हैं? Matter को एक composition से दूसरे composition में transform करते हैं, ठीक है? और साथ साथ अपना contribution देके abiotic component और biotic component दोनों balance करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? Let's say for example soil. Soil is biotic or abiotic component? Yes, class. Soil is biotic or abiotic component? What is it? Okay, Safiyur is saying abiotic. Others? I want opinion of others as well. Shivani is saying abiotic. Dibyanshu? Yes, Aryan is also saying abiotic. So basically soil supports the living organisms. इसका मतलब ये नहीं कि soil is biotic. After all, soil is non-living, but it supports the organism. It gives nutrition to the organism. Hence, it is called as a biotic component of the atmosphere. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? Let us look at some of the processes involved in the maintenance of above balance. बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का होना जरूरी है और इनका बैलेंस भी होना जरूरी है. तो कौन कौन से साइकिल इनका बैलेंस मेंटेन करते हैं? लेट्स सी दैट. Coming to first is water cycle. Water cycle is part of biogeochemical cycle, of course. ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. वाटर साइकिल से क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर साइकिल? कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं? विदाउट लुकिंग हियर. यस, यू ऑल कैन राइट डाउन द प्रोसेस इन द चैट बॉक्स. सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स डाल दो कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसमें. वन मिनट. ओके जी, कौन कौन से कंपोनेंट वाटर साइकिल में इन्वॉल्व है? वेरी गुड. इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. वेरी गुड आर्यन. यस दिव्यांशु, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. वेरी गुड. यस, एनीवन एल्स? Yes, very good, Prisha. Evaporation, condensation. Anybody else want to add something? That's it. Transpiration, precipitation. Very good. Yes, perfect. Yes, perfect. Coming back to the cycle. So basically यहाँ पे जो processes involved है वो है evaporation. Then you have respiration, transpiration. यहाँ पे rain and snow वाला है procedure और नीचे है ground water table. Okay. Precipitation is form of this वाला जो नीचे आता है in the form of rain. Rain is a form of precipitation. Condensation is cloud formation का process जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. Evaporation is already happening here. The water is getting evaporated. Okay. Transpiration is a process where plant loses excess of water to the atmosphere. ठीक है, जब सनलाइट गिरती है प्लांट पे तो उसमें से एक्सेस ऑफ वाटर को सक करके एटमॉस्फेयर को दे देती है. ओके, सो यहाँ पे जो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल से रिलेटेड जो ये वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और साथ में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे. डू यू अग्री विथ मी सो फार? यस, दैट इज व्हाई देयर इज अ इंक्लूजन ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज ट्रांसपिरेशन. जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो बायोलॉजिकल साइकिल थी. यहाँ पे जियोलॉजिकल साइकिल भी इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल because of inclusion of abiotic as well as biotic factors. Everybody clear? Can we go ahead? Yes? Okay.
So we have seen how the water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to the rain. ठीक है? But we didn't see the seas and oceans drying up. So how is that water returning to these water bodies? Obviously हम बचपन में क्वेश्चन हुआ करता था कि अब इवेपोरेशन होता है पानी का ओशंस और सीज से, तो ड्राई अप क्यों नहीं होते? ठीक है, और उनमें पानी कैसे भर जाता है? ठीक है, जिसका क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका था. द होल प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स आर इवेपोरेटेड एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज अ रेन and later flows back into the sea via rivers is known as water cycle. ठीक है, water cycle is a process जिसमें पानी evaporate होता है, ओके, कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्म करता है, और क्लाउड जब सैचुरेट होते हैं तो इट कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. Okay, in our area it come down in the form of rain, but where there is temperature in negatives या फिर the lowest temperature or the coldest temperature, there it come down in the form of snow. Okay, there it come down in the form of snow. So far clear? ठीक है, so here the whole process in which rainwater evaporates and fall on the land as a rain and later flows back into the sea by a river is known as water cycle. इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. दिस साइकिल इज नॉट as straightforward and simple as the statement seems to imply. All of the water that falls on the land does not immediately flow back into the seas. Some of it sips into the soil and become part of underground reservoir as a fresh water. Okay, soil क्या करती है? सारा का सारा पानी सी में नहीं देती है. ठीक है, जहां पे सॉइल या फिर जहाँ पे सीमेंट के रोड है या फिर जहाँ पे सॉइल पोरस नहीं है, जिसमें सॉइल के एयर पोर्स नहीं है, ठीक है, वो सॉइल जो क्या करती है, सारा का सारा पानी को डायरेक्ट कर देती है टुवर्ड्स द रिजर्वायर. या तो लेक की तरफ डायरेक्ट कर देगी या तो रिवर्स की तरफ डायरेक्ट कर देगी. ठीक है, बट जो सॉइल फर्टाइल है, जो सॉइल पोरस है, वो क्या करेगी? पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रखेगी. जब ये पानी अंदर सीप होगा, सीप होना मतलब अंदर पेनिट्रेट होना, ओके, हमारे ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट होना. जब when the rainwater is seeping inside this soil at one point down underground, it will start collecting. इतना कलेक्ट होगा कि it will form a groundwater. This groundwater has passed multiple layers of the soil over here. Hence we call it as a fresh water. Because ये ग्राउंड वाटर जो है मल्टीपल लेयर्स को फिल्टर करके ग्राउंड में जाता है. ओके, मल्टीपल लेयर्स को फिल्टर करके ग्राउंड में जाता है और यहाँ पे ये कलेक्ट होता है. ओके, जो हमको बोरवेल में पानी मिलता है, जो हमको वेल में पानी मिलता है, दिस इज नथिंग बट अ ग्राउंड वाटर. इसलिए हमारे वेल के या बोरवेल के पानी का टेस्ट होता है. ओके, जैसे कि कोई कोई कुएं के पानी का टेस्ट मीठा होता है, कोई कोई कुएं के पानी का टेस्ट फीका जैसा होता है, बिकॉज ऑफ सीपिंग ऑफ द वाटर इन द ग्राउंड. सो फार क्लियर एवरीबडी? हेंस दिस वाटर इज फ्रेश वाटर. जो हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं वो ये वाला पानी है, ग्राउंड वाटर से आता है. ठीक है, yes, this water is very clean water, Safiyur, because it passes through different layers of the soil, right? Or different layer of the soil will filtrate all the impurities in the soil, ही वो अटक के रह जाएगी. All right, all of the water that fall on the land does not immediately flow back into the sea. Some of it seeps into the soil and become part of underground reservoir of fresh water. Some of this underground water finds its way to the surface through the springs. Okay, या तो वो spring बन के flow होंगे out of the this land, or we bring it to the surface for our use through the wells and tube wells. ठीक है, या तो वो wells के थ्रू हमें मिलेगा या तो ट्यूब वेल्स के थ्रू. ट्यूब वेल इज नथिंग बट द बोरिंग जो हम खोदते हैं ना पानी में, ग्राउंड में खोदते हैं in search of water. Water is also used by terrestrial animals and plants for various life processes, as shown in this figure. Let us look at another aspect of what happens to the water during water cycle. As you know, water is capable of dissolving a large number of substances
As the water flows through or over the rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in the water. Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea, and these are used by the marine organisms. Very important. ये जो पानी यहाँ पे जो फॉर्म होता है ग्राउंड वाटर पे, और जो वाटर सी को जाके मिलता है फ्रॉम द रिवर्स एंड फ्रॉम द क्या बोलते हैं कनाल्स वगैरह से, दिस फर्दर इज टेकन इन बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट्स. ठीक है. अभी ये जो पानी है ये सब कुछ डिसॉल्व कर लेता है. पानी का नेचर ही वैसा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग डिसॉल्व्स इन द वाटर. ओके, वेरी फ्यू सब्सटेंसेस आर एक्सेप्शन who doesn't dissolve in the water. Otherwise, everything dissolves in the water. ठीक है? So, as the water flow through the rocks containing soluble minerals, some of them also get dissolved in the water. And river carry many nutrients from the land to the sea. These are used by marine organisms. Yes? Yes, chemical filtration is also done in the process. For example, अगर बहुत सारा potassium यहाँ पे जमा है, in this soil is having lot of potassium, or this is soil is having lot of nitrogen. Okay, the water will also carry nitrogen and potassium along with it in the flow when it is flowing towards the sea, and it will carry that along with it in the sea water. Now this nitrogen and potassium is in turn used with the marine animals. जो सी के अंदर की दुनिया है उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है. So the water which is flowing through all the surfaces यहाँ से जा रहा है towards the sea, it will carry these minerals along with it. और ये सी के एनिमल्स को इजीली मिल पाता है. अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल. ये तो हमने बचपन से पढ़ा है. ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी इवेपोरेट होके पानी ऊपर जाता है फ्रॉम द प्लांट्स, और रेस्पिरेशन से भी इवेपोरेशन पॉसिबल है. करेक्ट. रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर जनरेट होता है. आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स में लास्ट ईयर, राइट? हमारी बॉडी में वाटर जनरेट होता है. जितना चाहिए वो वाटर हम यूज करते हैं बॉडी के लिए, और जो अनवांटेड वाटर है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, राइट? यस. सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन. इवन प्लांट का ट्रांसपिरेशन ऑल्सो फॉर्म्स अ क्लाउड. यस. शैल वी मूव अहेड? एवरीबडी रेडी? Am I going too fast? Yes? Am I? No. Okay. Perfect. So ये तो था वाटर साइकिल. दूसरा बायोजियोकेमिकल साइकिल है. थैंक यू शरणजीत. दूसरा बायोजियोकेमिकल साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल. ये इसके बारे में भी हमने पढ़ते आ रहे हैं. हाउ नाइट्रोजन, atmospheric free nitrogen is fixed by denitrifying bacteria, lightning in the environment, and it is sent to the soil, and plant is taking in fixed nitrogen from the soil with the help of which organisms? Symbiotic organisms. Which are the common symbiotic organisms जिससे नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता होती है? They live on the root nodules. What are they called as? Exactly, Safir. Very good. Rhizobium. Perfect, Prisha. Rhizobium. ठीक है? We will be seeing this now. Nitrogen gas makes up 78% of our atmosphere. ठीक है? And nitrogen is also part of many molecules essential to the life, like protein, nucleic acid. जैसे कि DNA and RNA is made up of nitrogen. ठीक है? भले ही atmospheric free nitrogen नहीं है, but they have components of nitrogen present in them, our bodies, DNA and RNA, and some vitamins also. Nitrogen is found in other biologically important compounds such as alkaloids and urea too. ठीक है? Nitrogen is also essential nutrient for all the life forms, and life would be simply if all of these life forms could use the atmospheric nitrogen directly, जो possible नहीं है. ठीक है? अगर लाइफ और भी सिंपल होती, अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती, जितना चाहिए एब्जॉर्ब करो, बाकी छोड़ दो. बट हमारी बॉडी की डिजाइन वैसे नहीं है, ना प्लांट के बॉडी की डिजाइन वैसी है. ओके. However, other than few forms of bacteria,
that is called as rhizobium. आपने मुझे example दिया है. Life forms are not able to convert comparatively inert nitrogen molecule into the forms like nitrates and nitrates, which can be taken up and used to make required molecules. ठीक है. हमारे लाइफ में, हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, इट इज इनर्ट इन नेचर. प्लीज मार्क दिस ऑन इन योर नोट्स. इट इज इनर्ट इन नेचर. इनर्ट मतलब इट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर. रॉ नाइट्रोजन है पूरा का पूरा. ठीक है. ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है. It is inert in nature. It doesn't react with anybody, but if our body needs nitrogen, the life forms need nitrogen. So this inert nitrogen is converted in the form of nitrates and nitrates. It is converted into nitrates and nitrates. Okay. Now this two forms can be taken up by the body and used for the life processes. Okay. These nitrogen fixing bacteria may be free living or be associated with some of the species of dicot plants. Which are the nitrogen fixing bacteria? You have told me already in the chat box. Okay. These are nitrogen fixing bacteria. They are called as rhizobium. तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ये क्या करते हैं? आइदर दे आर अवेलेबल इन द फ्री फॉर्म. 1 minute. Yeah, these nitrogen fixing bacteria are either available in the free form or associated with dicot plants, जैसे कि legume plant. Most commonly, this nitrogen fixing bacteria are found on the root of leguminous plant, generally the plant which give us pulses. Dal, then peas, ये सारे plant के root nodules पे पाए जाते हैं. अब ये root पे क्यों settle होते हैं? You have already studied about this. ये रूट पे जाके क्यों सेटल होते हैं? ये बॉडी, ये कहीं और भी तो सेटल हो सकते हैं. इनके पास कैपेसिटी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की. तो इनको प्लांट की क्या जरूरत है? एनीबॉडी? इनको हेल्प की क्या जरूरत है जब ये खुद ही फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन? यस बट यस परफेक्ट. बट बैक्टीरिया को क्या फायदा है? बैक्टीरिया क्यों उनको रूट्स को देगा ये एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? What kind of symbiosis relation? Correct, you are Aryan and Sapir. But what kind of symbiosis relation? बैक्टीरिया को इंटर्न क्या मिलेगा? Perfect, Prisha. Bacteria will in turn get food and a shelter. Yes, Sapir, correct. Aryan, absolutely. So ये क्या करेगा? ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो फिक्स करके प्लांट को मिल रहे हैं ना एब्जॉर्ब करने के लिए, वो प्लांट इन टर्न उनको शेल्टर देगा. Because these bacteria are very delicate in the soil, they cannot completely survive on their own. Temporary period के लिए they can survive on their own, but after some time they will need somebody's support. ठीक है? So they will not survive on their own, and what they are going to do? They will be some plants. So this plant will give. हाँ, this plant कहाँ गया? हाँ, this special structure called as root nodules. Other than this bacteria, the only other matter in which nitrogen molecule is converted is nitrate, and nitrate is by physical process. ठीक है? This physical process we'll talk about, but उसके पहले ये वाला जो आप बता रहे हो बैक्टीरिया और फूड, इसको बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर मिलेगा और बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को दे देगा एब्जॉर्बिंग फॉर्म में. ठीक है? नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोसेस, this physical process is nothing but lightning. Okay, apart from bacteria, lightning also brings down atmospheric nitrogen to the soil. और lightning जब strike होती है तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल के साथ फिक्स हो जाता है. ठीक है? It also converts, lightning also convert the atmospheric nitrogen. Which is other physical process apart from lightning? Which other physical process can you refer to? Yes. Any other physical process you know, class? Animal waste, perfect.
वेरी गुड. सफ्यूर. एक एनिमल वेस्ट क्या होता है? एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स. ये जब सॉइल के अंदर जाता है, इट विल ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, वो भी नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में. तीसरे प्रोसीजर है रेन वाटर. रेन वाटर कैन ऑल्सो फिक्स, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में लाके छोड़ देता है. ओके. So during lightning, the high temperature and pressure created in the air convert nitrogen into oxides of nitrogen. Okay. These oxides dissolve in water to give nitric and nitrous acids. ठीक है. इसके बाद and fall on the land along with the rain. These are then utilized by various life forms. What happened to the nitrogen once it is converted in the form that can be taken up and used to make nitrogen containing molecules? Plants generally take up nitrates and nitrites and convert them into amino acid which are used to make proteins. ठीक है. नाइट्रोजन से सोचो कितना कन्वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनर्ट होने की वजह से इट कैनॉट बी टेकन अप डायरेक्टली. So this inert nitrogen is converted into nitrites and nitrate. Further, nitrite and nitrate are converted and fixed into amino acid, and amino acid is fixed by our body or plant body into proteins. Okay. Some other biochemical pathways are used to make other complex compounds containing nitrogen. These protein and other complex compounds are subsequently consumed by animals. Once the animal or plant dies, the other bacteria in the soil convert the various compounds of nitrogen back into the nitrates and nitrites. Very important. Okay. When these animals die, they are buried into the soil or they are taken up by the soil. They give back their nitrogen absorbed by the body in the form of nitrites and nitrates back to the soil. Understood? A different type of bacteria convert the nitrites and nitrate into elemental nitrogen. Thus, there is a nitrogen cycle in nature, which nitrogen passes from its elemental form in atmosphere into simple molecules in the soil and water, which get converted to more complex molecule in living beings and back again to the simple nitrogen molecule in the atmosphere. Here we have the cycle. ठीक है. Here we have the cycle. Starting from here, nitrogen in the atmosphere is fixed as nitrogen fixation bacteria. Okay, that is protoplasm in green plant will help to convert, is taken up by protoplasm in animals, क्योंकि green plants को animal खाते हैं और animal जो protoplasm खाते हैं green plant का, it convert ammonia. First stage. दूसरा स्टेज है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. ग्रीन प्लांट के अंदर प्रोटोप्लाज्म में सेटल होते हैं. ओके. फॉरगेट अबाउट प्रोटोप्लाज्म, ग्रीन प्लांट में जाके सेटल होते हैं. ये ग्रीन प्लांट जो है अमोनिफिकेशन प्रोसीजर फॉलो करता है. व्हाट इज अमोनिफिकेशन? दैट इज व्हाट बैक्टीरिया हैज डन. यस, दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन. Absorption of nitrogen from the soil, giving it to plant, in turn getting food and shelter. Ammonification. Ammonification gives out ammonia. Ammonia is fixed by nitrite and nitrates. Okay, and this process will continue like this. Here, second cycle. ठीक है. Third cycle क्या है? Directly nitrogen in atmosphere will come down to nitrification process. Now this nitrification process, atmosphere and industrial fixation takes place. ठीक है. एटमॉस्फेयर जैसे कि रेन वाटर, लाइटनिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस में आती है. इसके बाद इसका नाइट्रिफिकेशन होता है इस स्टेज पे, और उसके बाद इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रेट्स by denitrification bacteria and give it back nitrogen to the atmosphere. Which are this denitrification bacteria? जब ये एनिमल्स या प्लांट मर जाते हैं तो सॉइल के अंदर बरी होते हैं. So this is acted by denitrifying bacteria, that is microorganisms, giving back nitrogen in the atmosphere. Is this cycle clear with everybody? Everyone clear? Any doubt before moving on to next cycle? Any doubt? No? Perfect. Everyone clear?
ठीक है. We are moving on to next biogeochemical cycle. Thank you. All right. We are moving on to next biogeochemical cycle, that is third cycle, the carbon cycle. Okay. What have we done so far? We have done the water cycle, nitrogen cycle. Now we are on the carbon cycle, and most probably we have oxygen cycle and ozone layer. We'll come to that. Okay. So can I a little bit speed up for now, if you don't mind? If you have any doubt, please let me know in the chat box. I'll slow down. Okay? I'll slow down myself. Is it okay if I speed up class? थोड़ा सा? ठीक है. Thank you. Okay, there we go. Carbon is found in various forms on the earth. Almost सारे organic form में carbon present है. That is why we call things as organic, right? Organic are the things, or are the objects which contains carbon. ठीक है? Which contains carbon. So हम उसको organic बोलते हैं. Organic chemistry is related to the study of carbon. Inorganic, other than carbon, everything is present. Yes? Okay. So it occurs in the elemental form as a diamond and graphite in the nature. In the combined state, it is found as a carbon dioxide in the atmosphere and as carbonate and hydrogen carbonate salts in various minerals. जो हमको minerals मिलते हैं अर्थ से, that has carbonate and hydrogen carbonate. ठीक है? While all other life forms are based on carbon containing molecules, like proteins contain carbon, carbohydrate contain carbon, fats contain carbon, nucleic acids and vitamins also contain carbon. अगर आप उसका molecular formula देखोगे, yes, proteins का तो उसमें carbon है, carbohydrates का उसमें भी carbon है, glucose का भी formula है, fats is simpler complex form of glucose, so it is COOH, C6H12O6. Yes, C starts for carbon. Vitamins, nucleic acid, everything is made up of carbon. The endoskeletons and exoskeleton of various animals are also formed from the carbonate salt. Okay, so skeleton level तक carbonate के salts है. Carbon is incorporated into life form through the basic process of photosynthesis, which is performed in the presence of sunlight by all life form that contain chlorophyll. ठीक है? कार्बन कहाँ से शुरू होता है आना? कार्बन स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यही एक प्रोसेस है नेचर में जो कार्बन को डायरेक्टली इवॉल्व करता है, जो कार्बन एटम्स को रिलीज करता है. दिस प्रोसेस कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिसॉल्व्ड इन द वाटर इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. These glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy for synthesis of other biologically important molecules. So ये जो कार्बन एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट होता है, ये प्लांट जब लेते हैं तो ये कार्बन के मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में पास ऑन करते हैं. ठीक है? और तो और ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी निकलते हैं उसमें से, क्योंकि अपना खाना बनाते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं, राइट? प्लांट अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में बनाते हैं. डू यू अग्री विथ मी क्लास? स्टार्च इज नथिंग बट ग्लूकोज बनने का पहले वाला स्टेप. पहले स्टार्च बनता है, फिर स्टार्च में से ग्लूकोज बनता है. क्लियर एवरीबडी? यस. सो these glucose molecules are either converted into other substances or used to provide energy or for the synthesis of other biologically important molecules. The utilization of glucose provide energy to living things involves a process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back to the carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere. Okay, everybody knows the process of this respiration. Respiration में क्या होता है? Glucose. Okay, glucose plus ऐड क्या होता है ग्लूकोज में? प्लस एनीवन? What happens? How does this process of respiration takes place? ग्लूकोज के साथ क्या ऐड होगा? ग्लूकोज प्लस
हम्म। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है आप लोगों ने? एवरीबडी? हाँ, तो एरोबिक में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, 7th स्टैंडर्ड वाला। एरोबिक में परफेक्ट दिव्यांशु। Aerobic respiration happens in the in the presence of oxygen. So glucose in the presence of oxygen will give you what products will be given out? Carbon dioxide plus, yes, perfect Aryan. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यस एनर्जी मॉलिक्यूल, और एक प्रोडक्ट इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी एंड वाटर, परफेक्ट दिव्यांशु, वेरी गुड। ओके, so glucose plus oxygen, this is called as aerobic respiration, which will give out carbon dioxide, ATP, that is energy molecule, and water. ठीक है? What is anaerobic respiration? Anaerobic respiration, where are others? Anaerobic respiration, anyone? Absolutely, Sapir, very good. No oxygen, absence of oxygen, very good Aryan. Absence of oxygen में anaerobic respiration होता है. So anaerobic respiration में क्या होता है? Glucose will break down into, yes, glucose will break down into what? Glucose will break down into fast, quick. Class, you have studied this. Just try to remember. Glucose will break down into, oh, no, 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 no. No, 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 you are going in other direction. हाँ, किसने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड? Carbon dioxide is correct. Prisha, correct. But there are two more products evolved. Glucose will break down into carbon dioxide. Instead of water, alcohol बनेगा बॉडी में. ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन, तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी. ठीक है? और इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल रिलीज हो गया, और उसके साथ साथ एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन एनर्जी कंप्लीट एनर्जी नहीं होगी, वो पार्शियल एनर्जी होगी, आधी एनर्जी जनरेट होगी, बिकॉज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज not undergone in a chemical reaction in the absence of oxygen. ठीक है? Absence of oxygen will impact this process, and hence there is called as anaerobic respiration. ये anaerobic respiration obviously, Dibyansh, as you said, will happen in the cellular level of organism. ठीक है? And this is temporary process. जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा ब्रिस्क वॉक करते हो, कुछ भी तरह की एक्टिविटीज करते हो, that time your body undergoes anaerobic respiration. ठीक है? And you get tired, you get exhausted. That is because of the lot of energy required. Okay, coming back here. So far clear aerobic and anaerobic respiration. So coming back to that statement, sunlight by all life form that contains chlorophyll. This process converts carbon dioxide from the atmosphere or dissolved in the water into glucose molecules. Okay. Now these glucose molecules are either converted into other substances used to provide energy for synthesis of other biologically important molecules. The utilization of glucose to provide energy to living things involves the process of respiration. दोनों भी process, anaerobic और aerobic दोनों भी. ठीक है? In which oxygen में, और yes, acid भी होते हैं, correct आर्यन. Lactic acid होता है, but that only takes place in muscles. Rest of the body में alcohol produce होता है. ठीक है? Acid का formation, lactic acid formation will only take place in the muscles. ठीक है?
Okay. The utilization of glucose to provide energy to living things involve the process of respiration, in which oxygen may or may not be used to convert glucose back into the carbon dioxide. This carbon dioxide then goes back into the atmosphere, and another process that कहाँ गया? हाँ, another process that add to the carbon dioxide in atmosphere is a process of combustion, where fuels are burnt and provide energy for the various needs like heating, cooking, transportation and industrial processes. एक तो रेस्पिरेशन से इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इतनी सारी आबादी रेस्पायर करेगी तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होगा. डू यू अग्री विथ मी? इतने कम प्लांट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेंगे, बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहेगा. दूसरा प्रोसेस है कंबशन, बर्निंग का प्रोसेस. दिस कंबशन will contribute to the carbon dioxide in the atmosphere. Do you agree with me, class? Either by transportation, either by industrial processes, जो चिमनी से धुआं निकलता है कार्बन का, जो कुकिंग के टाइम पे निकलता है, कार्बन तो निकलता ही है, भले वो कंप्लीट फॉर्म में हो या इनकम्प्लीट फॉर्म में हो. In fact, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere is said to have doubled since the Industrial Revolution. When human beings started burning fossil fuels on very large scale, carbon dioxide or carbon like water is thus cycled repeatedly through the different forms by the various physical and biological activities. What is the actual percentage of carbon dioxide in nature? What is the actual percentage? 0. 0. Yes, class, what is the actual percentage? Yes, 0.01%, not even 1%, 0.01% of carbon dioxide in nature. Yes, yes, and now the actually estimated percentage has increased to 0.03. Dibyanshu, you are correct. अभी वाला अगर आप परसेंटेज देखोगे नया अपडेटेड रिपोर्ट से, हमने इतना सारा कार्बन कंट्रीब्यूट किया है नेचर को, विच इज नॉट गुड फॉर आवर साइकिल, नेचर का साइकिल. ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट किया है? सबसे खतरनाक वाला इफेक्ट, व्हाट वी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट. नाम इतना अच्छा है लेकिन दिस इज द मोस्ट, you know, most worst part we have contributed to the atmosphere ever since our industrial revolution and ever since we started using fossil fuels. Fossil तो आप सभी को पता है is rich in carbon. Yes, क्योंकि वो बने ही होते हैं buried organisms, buried animals से millions and billions of years ago. Yes, your diesel, petrol, oil, these are all made out of extraction of animals. उनकी बॉडी से एक्सट्रैक्टेड प्रोसेस से बने हैं. So carbon dioxide in atmosphere cycle over here. First process is organic compounds in the plant. ठीक है, यहाँ से कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं? फर्स्ट ब्रांच निकल के वापस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. दूसरा ब्रांच निकल के जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स. इसके दो ब्रांच, एक तो पेट्रोलियम और एक तो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट, दैट इज शेल्स ऑफ एनिमल्स. And it will further respiration and decomposition will send it back to the atmosphere. Third process है organic compound in the plant will give rise to directly petroleum. ठीक है, और petroleum will be utilized by us. Again organic compound will give rise to coal. ठीक है, इसके बाद जो last process है directly ये आएगा carbonate in water and it will form limestone. I told you, I showed you last time pictures of caves, you remember? Of my last visit, those were limestone caves. I told you about the caves. The limestone was completely hanging over. It is a natural mineral, in fact. Okay, it is natural. Anything which is forming naturally is not harmful to the atmosphere. ठीक है, तो limestone की जरूरत है. We use it as a mineral. We use it as a medicinal purpose as well. So recall the reading taken by your under
In activity, heat is trapped by glass, and hence the temperature inside the glass enclosure will be much higher than the surrounding. If you close windows and doors, let's say for half an hour, will you feel suffocated? You will feel heat inside the room. Yes? Yes or no? Yes. So this is because of the heat what we are evolving. The carbon dioxide we are evolving from our exhalation. This carbon dioxide will be added in the room, and if we do not release this carbon dioxide, it will come to us in the form of heat. This phenomena was used to create the enclosure where tropical plants could be kept warm during the winters in colder climate. Such enclosures are called as greenhouses. ठीक है, these enclosures were called as greenhouses. और ये कहाँ पे यूज होता था? जैसे आर्कटिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे टेम्परेचर फॉल्स बिलो नेगेटिव, इट फॉल्स बिलो जीरो, इट गोज डाउन टू एक्सट्रीम नेगेटिव्स, वहां पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज करते थे. प्लांट को एक एनक्लोजर में रखते थे, उसको सब जगह से क्लोज करते थे और उसको हीट का इफेक्ट देके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते थे. ठीक है. ग्रीन हाउसेस हैव आल्सो लेंट देयर नेम टू द एटमॉस्फेरिक फेनोमेना. अब हमारा कैसे हो रहा है? वी आर यूजिंग सो मेनी नेचुरल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ यूज करें जिसकी वजह से वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस गैसेस. आर कार्बन is contributing to the greenhouse gases, increasing the temperature of the earth. Some gases prevent the escape of the heat from the earth. An increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause average temperature to increase worldwide, and this is called as greenhouse effect. Carbon increase in the carbon dioxide content in the atmosphere would cause more heat to be retained by the atmosphere and lead to the global warming. ये global warming किस लिए हो रहा है? Of the greenhouse effect. How this greenhouse effect is contributing? Our industrial revolution, our smoke from industries, our uses of transportation. There are so many vehicles. If you see every morning, हर जगह पे every morning you will see jam, and you will see lot of smoke evolved by the vehicles. Correct? We are contributing. जहाँ पे morning में आपको ठंडा feel होना चाहिए, वहाँ पे morning में आपको गर्म feel होता है, even in the winter days. Yes? So far clear, everybody? Any doubt? Yes? Any doubt, class? I'm waiting for your reply. No. Okay. Am I going too fast? No, na? Okay. Now coming back to the oxygen cycle, which is very easy. Oxygen and ozone, they are known to you. We'll just quickly go through it. Oxygen is very abundant element in our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere to the extent of 21%. ठीक है. सोचो 21% ऑक्सीजन होने के बाद भी 0.02% का इंक्रीज हुआ है कार्बन का, एंड स्टिल वी आर फीलिंग द ग्लोबल वार्मिंग. इमेजिन हाउ हार्मफुल वी आर एडिंग कार्बन, जिसकी जरूरत नहीं है. इवन ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. यस, द हीट लेवल आर राइजिंग डे बाय डे. इज दैट क्लियर? यस. So it is also occurring extensively in the combined form in the Earth's crust as well as also in the air in the form of carbon dioxide. In the Earth's crust, it is found as oxides of most metals and silicon, and also carbonate, sulfate, and nitrate along with other minerals. It is also an essential component of most biological molecules in carbohydrate, protein, nucleic acid, and fats. Okay. So carbon, oxygen forms almost everywhere you can find, right from the earth crust to the living organism. But when we talk about the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the level of oxygen in the atmosphere. Oxygen from atmosphere is used up in three processes, namely combustion, respiration, and in the formation of oxides of nitrogen. ठीक है. जो नाइट्रोजन साइकिल देखा था उसमें ऑक्सीजन यूज होता है. रेस्पिरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें ऑक्सीजन यूज होता है. और कंबशन दैट इज बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. राइट? बर्निंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. राइट? एयर इज हैविंग ऑक्सीजन. नाउ
Oxygen is returned to the atmosphere in only one major process, that is photosynthesis. Only one process returns oxygen to the atmosphere. Rest all of the process takes in oxygen from the atmosphere. And this forms the broad outline of the oxygen cycle in the nature. Oxygen formation का यही एक broad outline है. If you see your oxygen cycle, क्या होता है? Organic molecule will respire, evolve CO2. CO2 will be taken up by the process of photosynthesis and again organic molecule. ठीक है? Again, atmospheric oxygen will be respired, taken in by the glucose by the process of respiration. It will give out water molecule. Water molecule will be taken up by the process of photosynthesis or oxygen निकलेगा. These are two main processes. Though we usually think of oxygen as being necessary to the life in the process of respiration, it might be interest to you to learn that some life forms of the earth, especially bacteria, are poisoned by elemental oxygen. In fact, even the process of nitrogen fixing by bacteria does not take place in the presence of oxygen. जो राइजोबियम वाला प्रोसीजर है वो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के नहीं. ठीक है. हालांकि लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ is majority dependent on oxygen, but there are few organisms on the earth which doesn't require oxygen to live alive. Oxygen is like poison to them. Yes, one is your rhizobium, another one is your yeast. Yeast anaerobic respiration में जाता है, right? वाइन इंडस्ट्री में यूज होता है, बेकिंग के लिए यूज होता है. Yes, that doesn't require oxygen. In oxygen presence में वो मर जाता है. Then there is no fermentation process taken place. Clear so far? Can we move towards the last part of the chapter? Yes, there we are, ozone layer. We are all aware about it. ठीक है? Elemental oxygen is normally found in the form of diatomic molecule, that is O2. Diatomic मतलब two atom वाला molecule. However, in the upper reaches of the atmosphere, a molecule containing 3 atoms of oxygen is found. That is O3, which we called as ozone. ठीक है? And this is called as ozone. Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous and we are lucky that it is not stable nearer to the Earth's surface. Ozone layer is important. It is protective layer, but it is not inhaling. It is not good for inhalation since it contains triatomic molecule. Ozone is poisonous and we are lucky that it is not near to the Earth's surface, but it performs an essential function where it is found. It absorbs harmful radiation from the sun, and this prevents those harmful radiation from reaching to the surface of the Earth, where they may damage the many forms of the life. ओजोन क्या करता है? सन के रेस को एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर करके हमें भेजता है on the Earth. Recently, it was discovered that this ozone layer was getting depleted. Before COVID, if you have heard about it, ozone layer was getting depleted because of lot of industrial activities. Yes, various man-made compounds like CFCs, carbon, chlorofluorocarbon बोलते हैं जिसे. These are carbon compounds having chlorine as well as fluorine. ठीक है? Were found to persist in the atmosphere. Once they reach the ozone layer, they would react with the ozone molecule, and this resulted in reduction of the ozone layer. And recently, they have discovered it is difficult to imagine the consequences on the life of the Earth if ozone layer is dwindles the further. But many people that it would be better not to take chances. What many people thought? Let us reduce the chlorofluorocarbon वाली चीजों को, जैसे pollution, industrial effluents, जैसे कि transportation, use public transport instead of private transportation, walk to nearby places, do not use car or something, and do not use AC more than required. Okay, जिससे हम अपने CFCs को बचा सकते हैं ओजोन के साथ रिएक्ट होने से. These people advocated working towards stopping all further damage to the ozone layer. They were there, they have seen there is a decrease of CFCs जब ये सारे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया. अब 2 साल लॉकडाउन था, इनफैक्ट 2.5 years लॉकडाउन था, राइट, जिसमें व्हीकल्स बहुत कम चले, लोग बहुत घर के बाहर कम निकले. देयर वर लॉट ऑफ
less industrial effluents released in the atmosphere, सब कुछ बनता, right? Then we have discovered about the new fact. What was the new fact about ozone that time? एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी. What was it? In past 2 years, what happened to the ozone? Yes. In past 2 years, what was shown by the ozone layer? Anybody? Students, are you there? Yes, absolutely, Aryan. Ozone layer recovered from the hole it was having. पहले 1980 में इतना hole था, 1985 में इतना hole बढ़ा, 1990 में इतना hole बढ़ा. And by 2000s, the hole was almost everywhere on the South Pole and North Poles. ठीक है? But when this 2 years of lockdown happened, that time the ozone layer recovered itself and it was completely there present. ओजोन ने अपने आप को हील किया और अपना लेयर वापस रिकवर किया ऑन द बोथ द पोल्स. यस, सो वी वर लकी टू बी सेव्ड बाय दैट. द कोविड वाज अनफॉर्चुनेट बट इट आल्सो गेव अस सम फॉर्चुनेट लेसन्स ऑफ द लाइफ, राइट? So what have we studied so far? Life on the earth depends on resources like soil, water and air and energy from the sun. Uneven heating of the air over the land and water bodies cause winds. Evaporation of water from water bodies and subsequent condensation gave us rain. Rainfall patterns depend on prevailing wind patterns in an area. Various nutrients are used again and again in cyclic fashion. This leads to a certain balance in between various components of the biosphere. Pollution of air, water and soil affect quality of life and harm the biodiversity. So, we need to conserve our natural resources and use them in a sustainable manner. Is this chapter understood by everybody? Do you have any doubt? Yes? Ma'am, I have a doubt. Why are major holes present at the poles? Okay, because in the ozone layer. Okay, the ozone layer is surrounded by earth everywhere. Okay, all the sides. Yes, Safir, I'll come to your question. 1 minute. First, I'll answer Prisha. तो ये ओजोन लेयर जो पूरी तरफ प्रेजेंट है इक्वेटर पे है ना, ओजोन लेयर कैसा है? थिक है. और जब आप पोल्स पे जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन का डेंसिटी कम हो जाता है. ओके, बिकॉज ऑफ कोल्ड, वेरी वेरी कोल्ड और नेगेटिव टेम्परेचर्स. ठीक है, तो वहां पे जो ओजोन लेयर का ब्लैंकेट है थोड़ा पतला पड़ जाता है. एट इक्वेटर्स एंड अदर पार्ट ऑफ द अर्थ इट इज थिक, बट व्हेन इट कम्स टू द पोल्स इट विल बिकम थिनर. ठीक है, और आप सभी को पता ही है हॉट एयर जब राइज होता है इट गो टू द नॉर्दर्न साइड फर्स्ट. डू यू अग्री? जब लैंड से राइज होता है इट हैज लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू द कोल्ड एयर. आप लोगों ने कन्वेक्शन में पढ़ा ही होगा, कन्वेक्शन रेडिएशन इसमें. तो दिस कन्वेक्शन कारण क्या होता है, वार्म एयर ऊपर राइज होता है, कोल्डर एयर नीचे से प्लेस ले लेता है वार्म का. तो सेम हैपेंस व्हाइल हियर. जब ग्रीन हाउस गैसेस इवॉल्व होते हैं इट गोज टुवर्ड्स द पोल साइड. पोल साइड पे ओजोन का ब्लैंकेट पतला है तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो वहां पे होल बनता जल्दी है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर्स, क्योंकि वहां पे थिक ब्लैंकेट है, पोल पे थिनर ब्लैंकेट है. यस प्रिशा, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes, okay. Sapir, ma'am, will there be increase in temperature of atmosphere if we also use EVs as a, we always use AC in the cars? Okay, EV are electrically friendly vehicles, okay, or let's call it as electric vehicles. These electric vehicles, they use green energy. How green energy? If they use either they work on battery or either they work on charging. ठीक है, EVs जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेस इवॉल्व करते हैं बिकॉज देयर इज नो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उसका चांसेस है ही नहीं. सो इट इज मोर ग्रीन फ्रेंडली. फॉर एग्जाम्पल इट इज मोर इको फ्रेंडली. ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्न ही नहीं होता है क्योंकि उसमें फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोल डीजल प्रेजेंट नहीं है. तो वो जो धुआं छोड़ता है एट वेरी 50% लेस देन 50% ऑफ द फॉसिल फ्यूल, लेट्स से 10% धुआं छोड़ता है. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ ऑयल, या फिर ऑयल डाला हुआ रहता है गियर्स में.
और इंजन में, उसकी वजह से। अदरवाइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर मोर इको फ्रेंडली एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल वाला व्हीकल। सफियोर, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? एसी में क्या होता है, एसी में गैस होती है, ठीक है। नाउअडेज एसीज जो 5 स्टार रेटिंग वाले हैं, और इफ यू सी एसी के ऊपर एक टैग आता है इको फ्रेंडली करके, दोज एसीज डजंट इवॉल्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। जो पहले के एसी आते थे और जो पहले के रेफ्रिजरेटर आते थे, दे यूज्ड टू डायरेक्टली इवॉल्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि वो टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। Nowadays, they are using more of the technology which will not emit carbon in the atmosphere. And hence, they are marked with the green wala symbol, eco-friendly. ऐसा पत्ता वाला symbol होता है, which shows that they are not evolving more carbon. Hardly 1% carbon evolve होता होगा, बस. Okay? Any other doubts? Sharanjit? Aryan? No? All right. Shall we wind up here? We are finished with the chapter Natural Resources. We are done. Chalo, good night. Bye-bye. See you.